Hello, welcome to Radiant Realization with Namrata. Here we deep dive into captivating conversations about life. Today I have with me Abundance Magnet coach Shweta. She helps women ignite their love and passion in their relationship and turn relationship into heavenly experience. Welcome Shweta. I am excited to have you. और आपका जब भी मैंने इंस्टा पे सारे रील्स और वो सब देखे ना आई जस्ट कनेक्टेड इंस्टेंटली So much. It's just universe, I believe, who's helping you to grow. The power is with universe. We all are just channel. You, me, everyone is just channel. I believe that. So, Shweta, before we get into today's topic, law of attraction, and what all things we can do to get a desired life or desired future, Hmm. मुझे आपसे ये जानना है what got you started to take this as your coaching niche, start helping women, and become the channel that universe wants you to help women become better version of themselves. Okay. So let me start my journey from the time I got married. Okay. I was super duper passionate about working. I wanted to work. I had completed my fashion designing. I was postgraduate. But after getting married, somehow I could not work. I got married into a Sindhi family, so their working was not very much open. Okay, like you can work and all that kind of things. Might be that was my mindset, so I attracted that. And later on, I started asking my father-in-law to let me open my own boutique. I had my own boutique at home. I started working with my own boutique. It got great success, but within couple of months, my husband and my daughter met with a great accident. And when they met with a great accident, my daughter was only, I think, 2 or 3 years old. And I had to give a good time of 2 months, undivided attention. I had to give her. I had to give undivided attention to my husband at that time. So, making a family decision, I had to shut down with my work and be with my family. And this drained me out so much that I could not bounce back to working as an designer. Stopped working as a designer. Later on, I started working with my husband. I worked with him for 5 years, but I was somehow not content and happy working over there. I was not feeling that fulfillment. There was always a vacuum inside myself, deep vacuum. I was not able to understand what is this deep vacuum. I was just running here and there, chasing this, chasing that, but nothing was giving me happiness. Sometimes I used to feel that buying this branded handbag is making me happy, buying this stuff is making me happy. But when I used to get that stuff at home, this is all mine, but I was not happy. I never used to understand पता नहीं happiness क्या होती है. People started telling me you don't look like happy. मुझे समझ नहीं आता था happiness होती क्या है. I had a picture perfect family, very loving husband, very loving daughter, everything that somebody desires, everything I had, but I was not happy. So this journey went out till 15, 16 years of my marriage. Then COVID did hit. And when COVID did hit, तब तक मैं ऐसे समझती थी मेरे रिलेशनशिप 2-3 की स्केल पे थे. I started in self-development industry. My first mentor was Pooja Punit. I started with Pooja Punit. I started growing with her. I started evolving every single day. I started evolving. I started becoming better version. I started healing from deep inside. जब deep inside से healing होती है सारा trauma निकलता है हमको लगता है क्या चीजें हमको hit कर रही है क्या चीजें हमें परेशान कर रही है. We come out of that zone slowly and gradually. When I came out of that zone, I discovered the most amazing self of myself. I said, okay, I don't need an expensive handbag to be happy. I don't need any car. I don't need any material to be happy. Happiness resides inside myself. The biggest learning from the first self development industry was you can only give what you have. If you don't have love inside yourself for yourself, you cannot love anyone. I was just being loving, kind, compassionate to everyone without loving myself. I was trying that world should accept me without I was accepting myself. And I was saying, I was just feeling drained out. I was the biggest example of people pleaser.
एंड व्हेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ लव केम इन टू माई लाइफ, तो मुझे पहले तो ये लगता था कि भैया अगर मैं खुद से प्यार करूंगी तो ये लोग तो सोचेंगे ये बड़ी सेल्फिश है. Then very beautifully, my mentor explained me for becoming selfless, you have to become selfish for a while. I started practicing it. I started accepting myself the way I am. I started loving myself like crazy. That made me magnet of anything that I desire. My relationships from the level of 2 to 3 went to the level of 10. I was like, भैया ये क्या हो गया? Every relationship compliments that every woman is looking from their husband, that started coming to me effortlessly. I didn't wanted the physical compliments. I didn't wanted the compliments like you look good, you dress up well. I wanted my husband to see the person inside me. I didn't wanted my husband to see the outer version of the way I look. He started seeing that version. I wanted my daughter to connect with me. I remember the door where very next door is my daughter's room. So whenever she used to come on upper floor, she used to just go to her room. She never used to come to my room. मैं बुलाऊं भी तो she used to come with heartlessly. She used to sit for a while and she used to go off. The compliment that I got from her, I look being like you, mom. I love the way you are. You are my mentor. I want to live the life like you. I said, okay. ये कब हुआ? The journey started with loving myself. The journey started with accepting myself. I was rejecting the most beautiful creation done by God, but just rejecting, saying, भगवान जी ये ठीक नहीं दिया, भगवान जी ये ठीक नहीं दिया, भगवान जी ये ठीक नहीं दिया. फिर पता पड़ा भगवान जी ने तो जो दिया है वो सबसे अच्छा ही दिया है. And once I did evolve, I understood this journey is never going to end. Evolvement journey is never going to end. But what if I have people evolving with me together? Why I am only running to evolve? Let me help other people evolving. When I saw this most beautiful version of life, I started evolving people around me. I basically work with women's. Why women's? Because I have deep rooted beliefs that women's are root to their family. If roots are healthy, fruits are going to be healthy. If roots are not healthy, fruits are not going to be healthy. So a happy woman can create heaven in her home, right? And heaven is the place everybody would love to go. Husband hai, बच्चे हैं, in-laws हैं. So I believe a woman is a root to her family, and if she can create this happiness, this joy into her family, you just feel a husband going to a work where he's very happy, just being served, just being loved, just being accepted. How magically he can work in this place. Yes. So the same way I Yes. started helping women so much. एंड आपको पता है आप जब किसी और को एनलाइटन करने में हेल्प करते हो ना, तो आपको लगता है आप किसी और को हेल्प कर रहे हो, लेकिन रियल जॉय लाइफ का वहीं से आता है जब आप किसी और को एनलाइटन करते हो, तो यू फील कि ओके. But for enlightening someone else, you have to on your light permanently. You can't be becoming the candle जिसकी अपनी लाइट नहीं जल रही है और वो हर दूसरों की लाइट जलाने जा रहा है. वो पॉसिबल नहीं है. You have to be in a constant journey of evolving. यस एंड श्वेता, सो आपका ये जर्नी है जहाँ पे आप वुमेन्स को यू गाइड देम टू बिकम हैप्पी वर्जन. दिल से जो खुशी आती है वो बहुत डिफरेंट होती है. वो एक्सटर्नल खुशी बैग्स और कार से जो आती है वो भी बहुत डिफरेंट होती है. सो श्वेता, ये पूरे प्रोसेस में हाउ डू यू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट आर द प्रिंसिपल्स बिहाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हिच गिव्स अस सो मच हैप्पीनेस. Okay. So law of attraction is what? Plan your life. What you want in your life to be. हम लोग लाइफ जीते हैं. मैं भी जीती थी इसी तरह से ऑनेस्टली. सुबह उठते थे, जो दिन में आएगा, जैसा सामने आएगा उसको फेस कर लेंगे. Law of attraction says don't live your life ordinary. Live the extraordinary life. How extraordinary life you can live is just knowing what you want in your life, knowing that you deserve that, which is the biggest factor. People forget that कि वो उस चीज को वो अंदर से बिलीव नहीं करते कि मैं इसको डिजर्व करती हूँ. ठीक है. Anyone getting married to any XYZ hero, suppose if you want to get married
He's not available. But then I'll say, if you want to get married to Shah Rukh Khan, you should feel that confidence inside yourself that you're worth getting married to Shah Rukh Khan. इफ यू फील पता नहीं यार मेरे से शादी करेगा कि नहीं, मैं अच्छी लगती हूँ कि नहीं, मैं उसको मैच करती हूँ, ही इज नॉट अवेलेबल बाय द वे, बट जस्ट फॉर द एग्जाम्पल आई एम सेइंग, आपको जो लाइफ में चाहिए, आप उसके लिए जब तक वर्थ फील नहीं करोगे ना, आप उस चीज को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एक्सप्लेन इट लाइक दैट वे, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ है, ठीक है, आपका सेल्फ वर्थ यहाँ है, इट्स नॉट अ मैच, यू विल नॉट अट्रैक्ट. If your capacity to hold a teddy bear is like this much, your hands are open this much, you can hold only a small teddy bear. No matter you're looking at the biggest teddy bear, but you can't hold it. For holding that teddy bear, you'll have to open your arms wide. Then only you can grab it. So where is the work to be done? The work has to be done with yourself. When you work on yourself, when you make the better version of yourself, you start attracting everything that you desired. And law of attraction is all about living the life with a planning, what you want in your life, how you want it to come to you, how much lifetime do you have, and by when you want to achieve it. It's a structural planned life which is called law of attraction. Adding up to it how you feel about things that you're trying to attract, adding up to it by when you want it, adding up to it what is the purpose that you want to live behind, what is the legacy that you want to live behind, what is that one, two, or three things that you want when you go back, like to God ji, you want to say to God ji कि भगवान जी, thank you, you gave me this when I came to this life. Or what people you want them to remember you as once you leave this earth plane कि अच्छा this person had this qualities. Yes, so this is what I believe is all law of attraction about. So, Shara, like you explained the frequency, if the desired frequency is here and if our current frequency, so ये जो gap bridge करना होता है, for that, what type of mindset we need to cultivate so we are able to rise to that level and successfully manifest what we desire? Have you heard this कि छोटे बच्चों में भगवान रहता है, छोटे बच्चों में भगवान होता है? ओके. Yes. तो बड़े होते होते तक भगवान कहाँ गायब हो जाता है? ये तो नहीं सोचा. Okay. So when you're small, you don't want anything from the world. You just laugh. You're hungry, still you run around, you laugh, you enjoy every moment of life. ठीक है? You know that you have your parents. You know there is someone who's taking care of you. You're not worried. You're connected as a channel to God ji. Everyone in your family also says ये बच्चा है, इसके अंदर भगवान है, ये वो. When you come to an outer world or an educational system, when you expose to all these things, when you expose to the surroundings around you, they start making you feel you're not enough, right? You need to do more to be enough. आज आप ये मानते हो कि मेरे अंदर भगवान है, यू आर एट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देन दिस स्टार्ट सेइंग यू आर नॉट इनफ, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये नहीं आता, आपको ये नहीं आता, यू आर नॉट गुड एट दिस, यू आर नॉट वर्थ ऑफ दिस. दिस lowers your frequency every single time. And whenever anything anybody is telling you, your subconscious mind is taking that information without understanding this is right or wrong. It's storing that information with itself. And from that stored information, your self talk starts happening. And the maximum time of the day, rather than talking outside, you're talking to yourself. And what are you talking to yourself? I'm not good enough. Things don't work for me. ये मेरे साथ नहीं हो सकता. I am not worth of doing or getting this. Yes, so this is something that lowers your frequency. Have you seen any kid with low confidence? 3 साल तक का बच्चा उठा लो, उसका कॉन्फिडेंस कभी लो होता है, उसको कभी कॉन्फिडेंस अप करने की जरूरत पड़ती है? कभी भी नहीं पड़ती. उसको उसकी माँ डांट रही होती है कि ये मत करो, वो मत करो, उसके बाद भी वो बच्चा हंस रहा होता है. यस. Yes, yes, yes. It's just the surroundings and the conditionings that you're going through that lowers your confidence, your self-worth. And this is only the journey of life. When you see all this and then you again rise up saying, okay, Bhagwan ji, I'm your best creation.
I know I deserve everything in life. I know I was meant to go through this journey to understand how it feels like going too deep down and rising up. Then only you raise your vibrations. This is where the actual cause of gap is. Your subconscious mind is taking all the information around you without understanding this is right or wrong. Whatever you say to yourself creates your belief system, and your subconscious mind can never tell you this belief is right or wrong. He'll just accept it as your belief system. It's just like you're wearing red glasses and seeing the world red, and you believe, okay, world is always red, but might be you remove that belief system from you, you remove that glasses, the world starts showing up in the natural colors. Yes. तो श्वेता, जैसे बोलते हैं ना कि what you say to yourself after the world has stopped talking to you, think self talk को हम बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। बट अगर कभी किसी ने ऐसा बोल दिया कि अरे नम्रता तेरे बाल ठीक नहीं है, देन द होल डे इट विल गो इन अ बैड हेयर डे। वो जब भी मॉर्निंग में तो वो बैड हेयर डे नहीं था, बट वन थॉट मेड इट अ बैड हेयर डे। True, true. And what your mind did, it just accepted the information which is coming from outside and did not change it. Just let it be like that way. हम्म। Okay. Where you speak about the hair, somebody telling you your hair are not good. I said, okay, ठीक है. You can just go for a quick wash and a blow dry, your hair are sorted. आप उसको सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हो, आप बैठ के उस चीज पे पूरा दिन क्रिप करोगे। ओ आई हैड अ बैड हेयर डे, आज मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, आई डोंट वांट टू शूट, आई डोंट वांट टू डू माय वर्क, आई डोंट वांट टू फेस द कैमरा बिकॉज आई डोंट हैव द गुड हेयर डे टुडे। व्हाट इफ यू जस्ट गो फॉर अ क्विक ब्लो ड्राई एंड you're sorted? आप हेयर की बात पे बात कर रहे हो। Till 18 years of my marriage, I have not left any hair doctor to be there. मैं हर हेयर डॉक्टर के पास जाती थी। I've taken so much of supplements. इतने सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी नम्रता, मेरे हेयर कभी अमेजिंग नहीं हुए। मेरे हेयर में कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ आई हैव गॉट द लेंथ दैट आई हैव गॉट, मुझे जो चाहिए वैसी लेंथ मुझे मिल गई, मुझे जैसा वॉल्यूम चाहिए मुझे वैसा मिल गया। मुझे जो, मैं हमेशा ही सोचती थी ब्लो ड्राई करने से बाल खराब होते हैं, कोई भी टूल्स एंड गैजेट्स यूज करने से बाल खराब होते हैं, हेयर लॉस इज अ नेचुरल प्रॉब्लम, हेयर लॉस सबको होता है, medication is natural, you have always to medicate yourself, nothing can repair my hair because I have this genetically, मेरे parents के hair थोड़े से scantier side पे हैं, तो this is going to come with me also. After coming to self help industry, I started learning the importance of hair is what in my life, because your hair gives you so much of confidence when you look to yourself. Yes, I started being grateful to my hair. I started just writing every day into my gratitude journal. God, I have most amazing hair on this earth. They are full of volume. They are full of way they are. It always looks the way I want them to look. Honestly, I'm constantly on blow dries. I'm constantly on hair straightening machines or any tools which are required to make your hair look beautiful. आप कभी किसी सलोन में जाके उस दिन आपको लगता है हे भगवान क्या मस्त बाल बनाया तूने, मजा आ गया अपने बालों को देख के। सो आई मेक माई हेयर लाइक दैट डे एवरी सिंगल डे। And with God's grace, if I can show, this is the length of my hair. It is growing like crazy. It is growing like crazy. It is giving me the volume that I want, and zero damage, zero medication for hair. No medications. I'm on no medications with God's grace. It's just what I believe becomes my reality. This is amazing, Shweta. Look, this like the belief that you have even in your hair, which we say it's like a non-living organ of our body. Yeah. If that can also react to our beliefs, what can beliefs do to our loved ones when we put in lot of trust in them? तो यही टॉपिक को थोड़ा आगे लेते हुए ट्रस्ट, श्वेता। यू सेड फॉर ट्रस्ट, ट्रस्ट की बहुत कमी होती है। देयर इज नो ट्रस्ट। आप सबसे पहले तो भगवान में ट्रस्ट नहीं करते। आपको लगता है भगवान मेरे लिए करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, आस्क यू सिंपली, व्हेन यू गो, यू माइट बी फ्लाइंग टू, मतलब आप कभी ट्रैवल करते हो, आप फ्लाई करते होगे, मतलब हम्म। एयरलाइंस
You might be flying by air. So do you know the person who's going to fly? You know the pilot personally, you know the name, you know his background, कितने साल से पढ़ रहा है, कितनी फ्लाइट्स ली हैं उसने, you know? नहीं पता नहीं, होगा। नथिंग, कुछ भी नहीं पता यू होता। जस्ट गिव योर लाइफ टू दैट पायलट कि मैं तुम्हारे एयरक्राफ्ट में बैठी हूँ, तुम मुझे उड़ा के इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन लेके जाओ। पता भी नहीं होता कि इसकी एक्सपर्टीज है भी कि नहीं है इस चीज में। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट मेक्स यू बिलीव कि आप इस एयरक्राफ्ट में बैठ जाओ? एक बार भी ऐसे दिमाग में ख्याल आता है मैं इस एयरक्राफ्ट में बैठी हूँ, मैं डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंची तो, मैं सीधा ऊपर पहुंच गई तो? बैठ जाते हो ना। यू जस्ट गिव योर लाइफ, यू यस। ट्रस्ट ना, यू ट्रस्ट कि मैं इसमें बैठी हूँ, आई विल रीच टू माई डेस्टिनेशन, आई हैव जस्ट पेड XYZ amount to the aircraft and they are taking me to the next destination. You can trust that pilot who's driving the aeroplane. You can trust the person who's driving the train. You can trust the cab person who's driving the cab when you sit into the cab. But you cannot trust the God who has created you. You always believe पता नहीं भगवान मुझे दोगे कि नहीं दोगे, पता नहीं वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा. So when you can trust the pilot, you cannot trust God. Why the doubt comes? Where there is a trust. हम 1 घंटे की, 2 घंटे की, 4 घंटे की फ्लाइट होती है, एक भी बार ये ख्याल आता है पता नहीं भगवान मैं पहुंचूंगी कि यहीं मर जाऊंगी, यहीं मेरी फ्लाइट का क्रैश हो जाएगा? एक बार भी ख्याल नहीं आता. We are so comfortable. We are just chilling. We are listening to music. We are reading books. We are eating. We are munching. We are enjoying that journey because we know हम पहुंच जाएंगे दूसरे एंड पे. This is manifestation. इस जर्नी से निकले हो, वहां पहुंच जाओगे. जस्ट एंजॉय द प्रोसेस. डोंट डाउट सो मच के पहुंचूंगी कि नहीं पहुंचूंगी, भगवान जी मर तो नहीं जाऊंगी बीच में, कुछ हो तो नहीं जाएगा? नहीं होगा कुछ भी. उस पायलट पे ट्रस्ट कर सकते हो, जिसने बनाया है उस पे ट्रस्ट कर लो. उस पे ट्रस्ट नहीं है हमको, बाकी सब पे ट्रस्ट है. डू यू अग्री टू दिस? 100%, 100%। मतलब ये एग्जाम्पल इतना कनेक्ट कर दिया मुझे, बिकॉज ये जो है ट्रैवलिंग टू डिफरेंट डेस्टिनेशन इज डे टू डे एक्टिविटी, ट्रू. यहाँ पे हम ऐसे ही ट्रस्ट कर लेते हैं। वेदर इट इज ओला उबर, वेदर इट इज एनी एयरलाइंस, वेदर इट इज रेलवेज, वहां पे तो हम कोई क्रीडेंशियल्स और क्रेडिट्स नहीं पूछते कि वो पर्सन पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। बट द ऑलमाइटी, जिसने ये सब क्रिएट किया है, उस पे हम ऐसा इंस्ट्रक्शन देते हैं, दिस इज नॉट हैपनिंग, व्हाई डिड यू डू दिस टू मी, व्हाई मी। श्वेता, आई थिंक ये ट्रस्ट का ये जो आपने एग्जांपल दिया ना, इट इट जस्ट रिलेटेड, बिकॉज हम ट्रस्ट करते हैं बहुत सारी चीजों पे, but still we lot of times we say, oh, I have trust issues, so I find problems in my relationship. It's not that trust is not there, it is situational trust. That is how we are acting every day. I believe in three simple policies in life. Whatever you want to attract now in your life, you should have immense love for that thing. You should have great respect for that thing. You should have trust for that thing. Suppose if I'm using this phone and this phone is iPhone 15, okay? I want to attract iPhone 16. Example, this is just an example. I don't have love for this phone. I don't have trust that this company is going to work for me. I don't have respect for this phone. Like I'm just throwing it off here and there. I don't keep it nicely. I don't, look to it. It's clean. It's always mess free. It does not has the clutter that it should not have. If I'm not charging it well, if I don't have love, trust, and respect for this thing, na, I'll be never able to attract iPhone 16. It is as simple as that. If you don't have love, trust, and respect for anything that you have in life or you want to attract, you will never attract the next version in your life. My life works on these three simple policies: love, trust, and respect. Whatever you want, start loving it, start respecting it, start trusting it. It is going to be all yours. इतना कर लो, बाकी कुछ करना ही नहीं है. Correct, correct. And I think वो ही नहीं आता है when we talk about relationship, when we talk about next promotion, or when we talk about having those money goals, 1 crore revenue, whatever.
we start doubting at each step. And one thing what I realized, Shweta, मतलब you can add to it, जितना हम कोई चीज को डिग करते रहते हैं कि इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आई थिंक इट डिलेज द प्रोसेस. इफ वी जस्ट सरेंडर, आई दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली एनालिटिकल पर्सन. और मेरे को एक बार दे दिया नंबर्स तो मैं उसमें पता नहीं कुछ भी निकाल सकती हूँ. Have you ever seen a plant growing from soil? Today, Namrata decides, okay, I want to grow XYZ plant. Chalo, let's take the example of a orange plant. Namrata took some orange seeds. She went into her garden. She did put some orange seeds. Now she's like, होगा कि नहीं होगा? Every second day she's opening. हुआ क्या? Sprout हुआ क्या? नहीं हुआ? फिर से बंद कर दो. फिर 2 दिन के बाद ओपन, लेट मी सी, आज स्प्राउट हुआ क्या? बंद. डज इट वर्क्स? It does not. हाउ विल इट? We just have to let it be. Like once you've put in, let it be What is to in your germinate. control? What is in your So, control? To put the seed into the pot, give it a yes, good fertilizer, understand yes. what temperature it needs, put it into under a right temperature. Just see the watering needs of that particular seed of the plant, anything which is required, understanding कि इसको इतना पानी चाहिएगा या इतना पानी चाहिएगा, अंडरस्टैंडिंग दैट नीड, डूइंग इट एंड नाउ सरेंडरिंग इट कि भगवान जी, यू आर डूइंग इट. यस. और एवरी सिंगल डे खोल के देखो, भैया हुआ क्या, हुआ क्या, ओपन करो एंड खोल के देखो. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. I agree with this. And I think this realization has brought the shift in me from like minimizing the analytical side of myself and believing a lot in how things would manifest in their divine timings. Yes. Okay, so, Shweta, when we, lot of times we say ki you should have a strong, powerful, positive intention for when you start doing things. Hmm. तो हाउ डू वी सेट दैट इंटेंशन? एक डिजायर होता है बट यूजुअली वो इंटेंशन सेटिंग डज नॉट come in a way that will help us to grow much faster. So, what are your thoughts on this? Let me give you the simplest technique which I use into my day-to-day life. This is going to be great help because it's been a great help to me. पहले ना आउटपुट देख लो, क्या चाहिए, कब तक चाहिए. Example, look yourself after 5 years. You can either look yourself after 10 years. Where you look yourself after 10 years? Where is your journey? मतलब अब आप वहां से पीछे आओ. पहले आप वो देख लो कि आप 10 साल में खुद को कहाँ देखते हो. और उससे ज्यादा ब्यूटीफुल वे है अपनी लाइफ को प्लान करने का. प्लान कर लो कितने साल जीना है. आपको 60 years जीना है, आपको 70 years जीना है. माइट बी योर एज वेरीज फ्रॉम व्हाट यू प्लान. इट्स नॉट दैट यू प्लान मैं को 60 years जीना है एंड गॉड इज गोइंग टू ग्रेस यू विद 60. माइट बी यू विल बी ग्रेस्ड बाय 55, यू विल बी ग्रेस्ड बाय 65, you will be graced by 70. But you should know by when I want to live my life. Come back from that point. If I want to live my life at 60, where I look myself at 60. ठीक है? Then I come back 10 years or 5 years back, like 55 or 50, where I see myself at that age. What I'm having, what are my surroundings looking like. Create a note of everything. Sit and plan कि मैं अगर 60th, मेरी 60th बर्थडे है एंड 60th बर्थडे आई एम लीविंग दिस अर्थ प्लेन, तो वो पॉइंट पे मेरे पास क्या है. फिर 55 पे मेरे पास क्या है, हाउ इज माई लाइफ लुकिंग लुकिंग लाइक. देन 50 पे क्या है, 45 पे क्या है. देन नाउ यू हैव अ क्लियर प्लान. आपने अपना प्लान क्रिएट कर लिया कि बाय द एज ऑफ 60 वेयर आई बी स्टैंडिंग, व्हाट आई बी डूइंग, व्हाट इज माई लाइफ लुकिंग टू. नाउ अंडरस्टैंड नम्रता, अगर आप वहां तक पहुंच गए, आपने सब कुछ अचीव कर लिया, डिड यू लिव द लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट? Yes, Yes. yes. Now you have come back to 5 years early to the age where you are. Now you have planned the life. अब आप example, I am right now at 44. So if I'm at 44, what my life looks at 50,
मैंने 50 तक का प्लान कर लिया। 50 से अब मैं आगे जब जाऊंगी ना, आई क्रिएट एवरीथिंग। अब मुझे 50 तक मैं आ गई, अब मुझे 47 तक क्या चाहिए, मुझे 45 तक क्या चाहिए, उसके बाद आई शुड हैव अ डेली प्लान। मेरे पास डेली प्लान होना चाहिए। ये मैंने डेली प्लान कर लिया, अपना सब कुछ मेरा प्लान्ड है। आई नो बाय 60 वेयर आई हैव टू रीच, आई नो बाय व्हेन व्हाट आई हैव टू डू, एवरीथिंग इज इन माय प्लान। एंड द मैजिकल ट्रिक आई टेल यू, buy a good red diary. Red is a magnet to magnify everything that you have. Red color. If possible, buy it with yellow pages. If possible, then start writing it with red pen. पहले 2 पेजेस में आप वो कर लो, अपनी प्रेयर्स लिख लो, बिकॉज यू आर गिविंग योर लाइफ टू गॉड जी, कि गॉड जी आपको ऐसा ऐसा, लाइक दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर माई लाइफ, ठीक है। First 2 pages should be prayers. It could be anything that you have connection with. It could be Hanuman Chalisa, it should be Gayatri Mantra, anything that you connect with. I'm a pranic healer, so it has my pranic healing prayers. My red diary has my pranic healing prayers. First 2 pages. After that, it has the detail how my life is going to look like at the end where I reach. ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट प्लान वॉट एवर लाइफ आई एम प्लानिंग टू लिव फॉर, वॉट एवर माई लाइफ इज गोइंग टू लुक एट दैट एज, आई प्लान yearly, monthly, and then I plan my every day a day before. रात को जब आप सोते हो, उसी रेड डायरी में आप लिखोगे, थैंक यू भगवान जी, मेरा दिन इतना अच्छा रहा, इट इज फॉर टुमारो। Today, like today is 17. I did write on 16 night, writing the date of 17/12/24. Thank you, Godji. You're doing podcast today. Godji, my podcast has went very well. I could serve the people. I could impact the people. These are the next schedules for the day. I am very happy. I'm very energetic. Thank you for all the servings that I wanted to serve. Thank you for the day of fulfillment, happiness, joy, and radiance. Closing the book, adding 3 thank yous. Thank yous always go with thank you, Godji, thank you, Godji, and thank you, Godji. Closing the book, syncing with, connecting with into that alignment, visualizing the day going it like that way. Closing the book, keeping it at your bedside. You're already ready for the next day. You know how your next day is going to look like. You planned your day. What if you start planning your life like that way? Do you think it is going to create a great impact on your life? 100%. Yes. You have a plan for your life. You know, people say, ऐसा मत करो, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, ये मत करो, Hmm. ठीक Hmm. पड़ेगा. How does that comes? Because if you're not doing something which is right according to you, you go into the guilt zone. When you die with guilty, you have to take a rebirth to come out of that guilt. If you die with fulfillment, you're already out of the cycle of taking birth again and again. So you decide you want to go out with guilt, or you want to leave your body with fulfillment. तो क्या किया आपने? What is law of attraction? As I said in starting, it is all about planning your life, what you want your life to look like. What I did right now, I took my red diary, I planned my life, how many years I'm living, what I want my life to look like, what are my surroundings, how I want my life to be at the age of 60, and how my life is today at the age of 44, and how I want it to be like. कई बार लोगों को ये नहीं पता होता what they want in life. Yes. Yes, वैसी थी long time back. क्योंकि Why लोग, I studied, why I took up commerce, क्यों पढ़ाई किया, कुछ नहीं पता. Just because I was part everybody of around is telling you कि पढ़ लो, नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं होने वाला. हाँ हाँ हाँ. ये कर लो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज रिक्वायर्ड, क्यों रिक्वायर्ड नहीं पता. शादी कर लो, इट इज रिक्वायर्ड, क्यों करनी है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट नोइंग. यस. लोगों को ना ये नहीं पता होता क्या चाहिए. बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है. मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं हम बड़ा कंफ्यूज है लाइफ में, हमको क्या चाहिए ये नहीं पता हमको. आप बोलते हो अब ये, लाइक यू नो, थिंक व्हाट यू वांट. It's difficult to know what you want, but the easy way is to know what you don't want in your life. Yes. When you know what you don't want in your life, the reverse is that you want in your life. The things that you're feeling envy about are the things that you want in your life.
So I always go with reverse. I heard a very beautiful interview of Shahrukh Khan where he's saying, मुझे कभी इच्छा नहीं होती मैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करूं, मुझे कभी इच्छा नहीं होती मैं सड़क पे खड़े रह के पानी पूरी खाऊं, मुझे कभी इच्छा नहीं होती कि मैं ऑटो में बैठूं. Because whenever you're thinking something, you're giving that signal to universe. ठीक है. What if a hero or heroine at top level says, काश ना मैं कभी लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर पाती. God is saying तथास्तु. Sudden dip. Now they like it or they don't like it. They are in the local trains because they manifested it when they were here. They did not manifest the next level by looking above. They just said, अरे वाह काश मेरी लाइफ ऐसी होती कि मैं भी आराम से लोकल ट्रेन में ट्रैवल कर पाती. सो वॉट एवर यू आर थिंकिंग, बोलते हैं ना हमारे हिंदू धर्म में कि मुंह पे सरस्वती बैठती है. सो आप जो बोल रहे हो वो सोचो, आपके मुंह पे सरस्वती बैठ रही है. तब भगवान आएगा आपको बता के, तो आएगा नहीं, तथास्तु बोल देगा. आपको तथास्तु बोल देगा तो आप फंस जाओगे वहां पे. एंड देन यू रियली डोंट वांट इट, बट knowingly or unknowingly you manifested it. Hmm. So manifestation is there, right? For us becoming aware कि ये law of attraction होता है, manifestation होता है, it's just an awareness that we are bringing in. वो तो उसका काम कर ही रहा है, हमें पता है या नहीं पता है. True. Okay. And Shweta, so जैसा आपने ये तथास्तु का बोला, which is like being grateful for what you have and everything. So in this manifestation journey, what is the role of gratitude? Okay. Gratitude is the key of getting everything that you desire in your life. Everything that you desire is in a lock. ठीक है? And gratitude is the key to get there. That is the role of gratitude. When I wanted to manifest a bigger car, at that moment, I follow the daily teachings of the book Secret. I just open randomly and see what is the message for me today. So when I went to that page, this is from years. I'm following this book from years. The book's name is Daily Teachings from the Secret. So the message came, whatever you want to manifest is the next level, right? You're here, you're manifesting this. But start being grateful at this level about that thing. I used to own a small car. I wanted to manifest a big car. Okay? I started being grateful about this car. I started saying, thank you, Godji, I have this car. At least I have the car. At least this car is helping me from extreme weathers, extreme sun, extreme rain, extreme. I see people walking around. When you go out on driving the car, you see people walking around, yes, and you feel, okay, भगवान जी आपने मुझे गाड़ी तो दी है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह easily जाना मिलता है. You don't have to stand and book the cabs. You don't have to book the autos. Example, I started being grateful. I started being the grateful for the AC that I had in my car. I started being grateful for the automations that I had in my car. I started being grateful. I stopped complaining completely कि ये कार अच्छी नहीं है, इसमें ये अच्छा नहीं है, उसमें वो अच्छा नहीं है, तभी मुझे वो कार चाहिए. No, I said everything is great in this car. Thank you, Bhagwan ji. As I started being grateful for this car, it took me only 3 months to get the bigger car effortlessly. And that car came into my life like, in a flicker of friction, because every day being grateful, I was raising my vibrational frequency. I was telling Godji that I'm grateful for what you have given me. He gave me the next level effortlessly. That is the key of reaching there. The lock was there to my that manifestation. Me just being grateful every single day, that opened the lock and I was there. I am the strongest believer of vision boards. Take it. So I do my vision boards. I bless my vision boards. Every year I have my vision boards. 90 to 100% my vision boards come true. Every year, whatever I desire, it comes true. So I had one car on my vision board. This is time when I'm talking that I was trying to manifest the car.
So I had one car on my vision board. And when the time came to buy this car, I just went to see the car. Now I did not like the car. मैंने बिना देखे कार विजन बोर्ड पे डाल दी थी, मतलब ऐसे आउटर अपीयरेंस देखा था, ड्राइव नहीं करके देखा था, मैंने सिर्फ विजन बोर्ड पे डाल दी थी कि भगवान जी मुझे ये वाली कार चाहिए, ठीक है. सो व्हेन आई वेंट टू सी द कार, आई डिड नॉट लाइक इट. अब नाउ व्हाट टू डू? देन आई केम होम. नेक्स्ट डे I opened the book Secret, the daily teachings. The message came, when you are asking for something from universe and you feel that that's not in alignment of you, just put the note, God ji, this or something better. I took a sticky note, a beautiful sticky note. I love good stationaries. I use good stationaries always. So I take a good sticky note and did put message, Bhagwan ji, if not this, something better. और उस कार के ऊपर मैंने लगा दिया. Within 10 to 15 days, I discovered more better car than that. And today that car is outside my door. Wow. Amazing, amazing. It's very simple. Manifestation is not at all complicated. आपके लाइफ में प्रॉब्लम कब आती है पता है? The problem, why you suffer, anybody suffering, why they are suffering? The sufferance is only because the lack of knowledge. When you get the knowledge, you're out of it. We just don't want to have knowledge and we say वो लकी है, उसको भगवान ने ये दे दिया. वो लकी नहीं है, उसने वो टाइम पे नॉलेज ले ली उस चीज से बाहर आने की. when he or she took the knowledge and they are out of it. और हम नॉलेज लेना ही नहीं प्रिफर करते हैं, हम लोग बैठ जाते हैं, हम बोलते हैं वो लकी है. So that means that goal is not really important for us. We are just trying to see कि like पता नहीं, देखते हैं, बोल के देखते हैं, लोग बोलते हैं अट्रैक्ट कर सकते हो, बट डिड यू पुट द एफर्ट्स टू अट्रैक्ट इट? Did you educate yourself well to attract it? There's no education, you can't attract it. If I say I want to be financially free, my goal is to get financially free, I want to attract financial freedom, I don't educate myself how I can be financially free. Can I ever be financially free? Though I'm attracting, though I'm being positive, गॉड विल पुट मी, मतलब मेरे इंस्टा आईडीज पे, मेरे हर जगह मैं वैसे कोर्सेज देखूंगी जो मुझे फाइनेंशियल फ्री होने में हेल्प करेंगे. अब मैं वो कोर्सेज ही नहीं उठाती हूँ. अच्छा, उठा भी लेती हूँ लेकिन मैं कोई एक्शन नहीं लेती हूँ. कैन आई बी एवर फाइनेंशियली फ्री? पहले मेरे अंदर थॉट आया आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री. सेकेंड, आई स्टार्टेड जनरेटिंग फीलिंग अराउंड इट. थर्ड, आई सेड भगवान जी आई वॉन्ट टू बी फाइनेंशियली फ्री. Fourth, the things started showing up for me which can make me financially free, but I'm not picking it up. Can I go to the next level? The next level is I'm financially free. I'm not picking this level because I feel छोड़ना यार, time नहीं है, I don't want to educate myself right now on this subject. Can I reach here? If I don't cross this line, I cannot never be here. This is the line of being financially free. But for reaching here, I'll have to educate myself. Is it hard? I don't think it is hard, but it the fourth stage, Shweta, what I have seen is it comes with lot of self-doubt and skepticism whether I can do this, whether I have capability of doing this, whether I'm making right decision. So I think वो stage पे ना manifestation बहुत time stuck हो जाता है. Okay. So this is the book that I read, the daily teachings that I'm saying from last 4 years. This is what I follow every day. जो मेरा self doubt kill करता है. I'll read it here. Here is the description of who really I am. Here is the description of who really I am. I am whole. I am perfect. I am strong. I'm powerful. I'm loving. I'm harmonious. I'm happy. If I keep on repeating this 7 things to myself every single day, where is the doubt, baby? I ask you to become the pilot and fly the plane. You can?
You can with right education. Yes. 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 The Yes. biggest stopper in your life is showstopper कह लो is the doubt or the confidence. You choose. Hmm. You want to be confident, you want to be doubtful. आप किसी को भी देख लो ना, you see anyone being successful. Can they be successful without confidence? No, possible ही नहीं है. अच्छा, getting confidence is very difficult. No, I don't think it is difficult, but yeah, you have to put in that right effort to become No, you confident have to version. educate yourself that what confident people looks like, what they show up like. I see people trying to attract money. Do financially rich people look like them the way they dress up every single day? You want to attract anything that you desire to. Are you showing up in the world in that manner? They don't show up. They just stay into their night dresses, they stay into the clumsy hair, they stay into, not wearing right clothes, not being in the right version of themselves, and they are saying, Bhagwan ji, humko paisa chahiye. First, go and look how paise wale people look like. They're wearing saaf suthra iron clothes. They are always smelling good. They're always wearing good things on their body because they feel that financially rich people look like this. Look at Neeta Ambani. She's financially very good. Do you have any picture of Neeta Ambani where she's looking haywire? You can't find a single picture of Neeta Ambani looking haywire. Before she had money, what she's having today. She's every picture, if you go and see her black and white picture, she's all put together because she was knowing that she's reaching here. And before she reaches there, she has to show up in that way in the world every single day. I don't tell go to parlors every day, get blow dry done, get well dressed. Don't sit into the clumsiest form in your home. You'll attract same energies. सेल्फ डाउट चला गया. आपने जो बात की थी कि बहुत सारा डाउट आता है, सेल्फ डाउट चला गया, आपका कॉन्फिडेंस वर्जन आ गया, आपका सेल्फ टॉक अफर्मेशन से हो गया, आपने शो अप करना शुरू कर दिया एवरी सिंगल डे. इफ यू वांट टू बिकम अ पायलट, हाउ डज अ लाइफ ऑफ पायलट लुक लाइक? वो कितने बजे उठते हैं? गो एंड फाइंड आउट अ पर्सन हु इज ऑलरेडी देयर वेयर यू वांट टू रीच, बिकॉज दैट पर्सन हैज क्रिएटेड द रोड मैप फॉर यू. फॉलो दैट रोड मैप, यू विल बी देयर. आप डाउट की बात करते हो, हमारे जो पीएम जी हैं नरेंद्र मोदी जी, we all know that as a child he used to work on a tea stall. If he would have doubt Hmm. himself, would he be there where he is today, and would he be able to create the impact that he's creating on everyone? Do you think that he has not raised his confidence? Do you think that he is not showing up in the perfect way he should show up like? Do you think that he is not educated himself the way he can add value to the world? Do you think after getting everything that he desired, is he still humble? Extremely. Yes. Do you think he's attracted everything in his life that he desired? 100%. Just by showing up, just by educating himself, just by believing that this is possible. I believe law of attraction is very simple. And I try to simplify as much as I can for everyone that I meet. Because अगर आप इसको कॉम्प्लिकेट करोगे तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेट है. अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर दोगे ये बड़ा सिंपल. मैं तो एक ही चीज मानती हूँ, एक इंसान पकड़ो, जहां पे आपको पहुंचना है वो इंसान ऑलरेडी वहां पे है. उसने आपके लिए रोड मैप क्रिएट किया हुआ है, और आज अगर वो वहां पर अभी भी मेंटेन्ड है तो उसकी लाइफस्टाइल को कॉपी कर लो. आपको समझ आ जाएगा कि वो क्या क्या करता है वहां पहुंचने के लिए. कंसिस्टेंसी से करो, एजुकेट करो खुद को. आपको जहां जाना है वहां आप कैसे जा सकते हो. और आज द बेस्ट एज दैट वी लिव इन टू एजुकेशन इज नॉट कनेक्टेड विथ एज. पहले हमें ये समझाया जाता था बाय द एज ऑफ 22 23 अभी पढ़ लो. अभी नहीं पढ़ोगे तो पूरी जिंदगी पछताओगे. बट नो वे, इट्स नॉट द सेम ओवर दिस टाइम नाउ. हमको कितना स्ट्रेस होता था हमारे मतलब पेरेंट्स को कि भाई हमारे बच्चे अभी 22 23 में पढ़ नहीं रहे हैं, बाद में दे सफर.
लेकिन आज हमको पता है दे कैन एजुकेट देम सेल्फ अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ देयर लाइफ वेन एवर दे वॉन्ट. I started educating myself in the age of 36. 36, 38, I started educating myself. I would have said to myself, अरे यार अभी तो एज हो गई, छोड़ो अब क्या पढ़ेंगे, अब तो क्या ही होगा लाइफ में. I would not have lived the life of fulfillment. I would have been victim of my mindset. And when I would have died, I would have gone with a big list to भगवान जी ये अच्छा नहीं दिया, भगवान जी ये अच्छा नहीं दिया, भगवान जी ये भी अच्छा नहीं दिया, भगवान जी ये तो अच्छा दे देते आप, आपने ये भी अच्छा नहीं दिया. Today I have list of things that I'm going to go and say, भगवान जी आपने ये ही अच्छा दिया. Thank you for the gurus and mentors that you send in my life. Thank you for the people that you have sent in my life who are helping me to evolve. Thank you for the family members. Thank you for the staff that I have who helps me to evolve, because without them this is not possible. Thank you for the home. Thank you for the love that I'm getting. Thank you for making me the channel to add in somebody's life. Today list is endless of being gratitude. अगर मैंने वो 36 की एज में या 38 की एज में वो टर्निंग पॉइंट नहीं चूज किया होता, आई वुड हैव बीन द ओल्ड वर्जन ऑफ मी, कंप्लेनिंग, क्राइंग, रिबिंग. Yes. So the action that you took when you are in your 36, that is 8 years of age, उसका आज आपको benefit मिल रहा है, and you are able to live yourself. Someone who खुद को ही खुद से बहुत प्राइड है कि yes, प्राइड नहीं I कहते, am able खुद to. को खुद से प्यार है, भगवान की बेस्ट क्रिएशन पे. मैं आज सबको ये एक चीज बताती हूँ, आप खुद को आईने में देखो और अपने अराउंड पीपल देखो, आप देखो आपको एक भी आपके जैसा नहीं मिलेगा. You will not find a similar face like you. You will not find a similar complexion like you. You will not find a similar hair structure, XYZ like you. Not one person also. That means what? You're not factory made. That means what? He himself, universe, has taken out time to sit and create you. And what you're busy at? Criticizing his creation. ये अच्छा नहीं दिया, ये अच्छा नहीं दिया, ये अच्छा नहीं दिया. When you start valuing his creation, because he has taken, he was not that free, he had so many work to do, but still he took out time to create you. Still he took out time to create the best destiny for you. Still he took out time to create the best family environment for you. Still he took out the time to see that you've been fed every single day, you've been looked after every single day. And what you're busy at? Finding out what did not go right in your life. अगर उसने क्रिएट किया है तो उसकी क्रिएशन का तो मान रख लो, उसकी क्रिएशन को तो आईने में देख के बोल दो, भगवान जी क्या चीज बनाई है आपने, देख के मजा आ गया. तो श्वेता, जब भी मैंने ये स्टार्ट किया मॉर्निंग में बोलना दैट नम्रता यू लुक ब्यूटीफुल, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ व्हेन आई स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग माई सेल्फ फॉर द वे आई लुक. बिकॉज बहुत बार जब भी एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को हम इंटरनलाइज कर लेते हैं ना, इट जस्ट टेक्स अस इनटू दिस नेगेटिव स्पाइरल जोन. हम्म. But what you said, I really connected because that was the phase in my life when I realized how to build confidence in yourself. Just by हम्म. looking in mirror, हम लोग 100 बार देखते हैं, but what I used to do, I used to look at my small pimple जो आया है, like a dark circle जो आया है, but then I changed my self talk, and it helped me. It really helped me to become a happy person. Okay. So when you were not liking yourself, at the point when you were not liking yourself, the you things that you did not find good in yourself, just asking because you're going to answer this, जो अच्छा नहीं लगता था खुद में, पिंपल आ गया या डार्क सर्कल्स XYZ, तो ऐसी ही बातें दुनिया से अट्रैक्ट कर रहे थे. Yes. Okay. So when you started looking at yourself and started saying that you're beautiful, you're the best version of yourself, you're the God's best creation every single day in the mirror to yourself, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे थे? In fact, I started getting people who started appreciating for way I look. पहले मुझे ऐसा बोलते थे, अरे यार तेरे तो बग्स बनी टीथ है, व्हाई वुड पीपल इवन वांट टू सी योर स्माइल.
But then people started complimenting me, Namrata, your smile is so beautiful. It is so welcoming. We really feel your friendship, your warmth when you connect with us. And I used to wonder, यार थोड़े दिन पहले तो मुझे सब बग्स बनी बोलते थे, अभी मेरा स्माइल इतना अच्छा हो गया. Because you started saying this to yourself. आप जो खुद को बोल रहे हो ना, आपका जो सेल्फ टॉक है, आप वही आउटर वर्ल्ड से अट्रैक्ट कर रहे हो. वी हैव अ ऑरा अराउंड अस, एवरीबडी हैज. ठीक है, हमारे ऑरा में हमारे थॉट्स रेडिएट करते हैं. यू हैव सीन सेंट्स, दे हैव वेरी पॉजिटिव ऑरा. ठीक है. I am a greatest follower of PK Shivani. I love Pooja Punit ma'am. Their aura is very good. When you be around there, you start feeling very good. Okay? Because their self-talk is very positive. Whatever they're talking inside themselves, they are radiating the same energy outside. So the people around them have started feeling good and comfortable with them. Yes? और उन जितना Yes. आपका सेल्फ टॉक बेटर है, जितना आपका सेल्फ टॉक अच्छा है, आपका ऑरा उतना एक्सपांड होता है. यस. तो जैसे आपने खुद को मिरर में बोलना शुरू किया कि नम्रता यू ब्यूटीफुल, आपका ऑरा रेडिएट होना शुरू हो गया ना पॉजिटिव मैनर, और आपने पॉजिटिव चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करनी शुरू कर दी. इट इज एज सिंपल एज लाइक दैट. एड अ क्लाइंट व्हेन आई सेड सबसे डिफिकल्ट है, हाँ, मिरर एक्सरसाइज इज अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज इन इनिशिएटिव, बिकॉज आप खुद को जो हो जैसे हो ऐसे देख के खुद को कॉम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हो. आपको दुनिया से कॉम्प्लीमेंट भले चाहिए. You want people to appreciate you on the way you look, on the way you speak, on the way you laugh, but you cannot compliment yourself. So when I started the journey with her, I started telling her, start complimenting yourself every single day. Do not leave your home after saying, giving high five to yourself and complimenting yourself 3 things for that day. And same is before you go to bed. This is what I also follow. So for first week, I just keep accountability that they are working or not. So she's telling me, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, मैकेनिकल लग रहा है. I said, भले मैकेनिकल लग रहा है, keep on doing, keep on doing, keep on doing, stay in the process, stay in the process. एक हफ्ता रख के अभी भी ठीक ठीक, लाइक देयर इज नो अलाइनमेंट विद व्हाट आई एम सेइंग टू माई सेल्फ इन द मिरर. मैंने कहा कोई बात नहीं, कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग, कीप ऑन सेइंग. आफ्टर 15 days शी स्टार्टेड फीलिंग गुड अबाउट हर सेल्फ. आफ्टर 15 days she started attracting so many good compliments from her office. Wherever she used to work, she used to get such amazing compliments for herself. After that, she started attracting good job opportunities and everything started sorting in her life, just because of doing this mirror exercise. बड़ा सिंपल सिंपल सा है, लेकिन लोगों को लगता है इतना सिंपल करके कुछ हो सकता है क्या. हो सकता है, 100% हो सकता है. करके तो देखो, एक बार ट्राई तो दो. पीपल डोंट ट्राई, सो दे आर स्टक देयर ओनली. Yes. वो स्टकनेस रियलाइज नहीं होता है हमको कि बहुत टाइम तक हम लोग वही जोन में स्टक है. श्वेता, so there's a lot of talks जहाँ पे बोलते हैं कि raise your vibration, you should be vibrationally very high. But ये concept थोड़ा high level concept लगता है. तब to layman, what will you explain? What is vibration and what it means to stay in a high vibration zone? ओके. आप जो सोचते हो ना, लोग नहीं बोलते हैं मेरे को ना आज अच्छा नहीं लग रहा, थिंग्स आर नॉट गुड विथ मी. So those are your thoughts. Whatever you're thinking about particular event, that are your thoughts around that event. That thoughts are creating your feelings, and that is your vibrational frequency. Your thought does not come from your heart. Whatever you think becomes your feeling, and that outputs your vibrational frequency. Simplest language में अगर मैं आपको समझाऊं तो. और आपकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, आपके अराउंड जो लोग हैं उन पे वो इम्पैक्ट करती है. ठीक है. अब किसी की डेथ हो जाती है, तो वहां पे अगर आप जाते हो तो लोगों का थॉट क्या होता है, अरे यार ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ नहीं ऐसा हो जाए, इनके घर में ऐसे कैसे हो गया, दिस पर्सन वॉज सो यंग, दिस पर्सन वॉज सो ओल्ड, एक्स वाई जेड. यू कीप ऑन क्रिएटिंग थॉट्स 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 अराउंड दैट पर्टिकुलर इवेंट. नाउ यू स्टार्ट क्रिएटिंग योर फीलिंग्स अराउंड इट. नाउ यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग अराउंड इट. On that day, whenever somebody is expired, you go there, you'll eventually feel bad.
if you have created negative thoughts around it. You've seen people who just go there, हाथ जोड़ते हैं and they come back. ठीक है? They are not staying there for longer period because they don't want to get connected to the vibrational frequencies of the people, aura of the people who are there. Secondly, they are not creating very much of negative thoughts and they are not getting impacted by that. अभी आप किसी की डेथ होती है, वहां पर भी देखो हर किसी का रिएक्शन अपना अपना होता है। कोई बहुत जोर से रो रहा होता है, कोई शांत होता है, कोई एक्सेप्ट कर लेता है कि ये चीजें होती हैं, ये नॉर्मल है। कोई ये सोचता है कि अरे इतने सारे लोग ट्रॉमेटाइज्ड हैं, लेट मी लुक टू द किचन ड्यूटीज, लेट मी फीड देम, लेट मी गिव देम वाटर। एवरीबडीज माइंडसेट इज डिफरेंट। सो वो जिस माइंडसेट से उस टाइम पे वहां पे काम कर रहे हैं ना, वो उनके थॉट्स हैं, वैसा ही वो फील कर रहे हैं और वैसा वो वाइब्रेट कर रहे हैं। अब आप अपने लाइफ का सबसे हैप्पी मोमेंट, द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट कुड बी व्हेन यू गॉट मैरिड। द मोमेंट दैट यू फेल्ट के शादी हो गई, मंगलसूत्र पहना, सिंदूर लगाया, द फैमिली अराउंड मी इज सो हैप्पी। सो वेन एवर यू थिंक अबाउट दैट मोमेंट, you are having a good feelings about it, you are creating a good vibration. So visualization क्या है? जो भी आप manifest करने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको visualize कर रहे हो, that is the thought, then you feeling good about it, then this is the vibration that you're putting out in the universe and same you're starting to attract. Now how you feel bad with the content that you're consuming? न्यूज़पेपर्स, कभी न्यूज़पेपर में ये सुना है कि इस गुरु ने इतनी तरक्की कर ली, ये गुरु ने इतना मेडिटेशन में इतना कर लिया, इस गुरु ने 200 लोगों की लाइफ को इवॉल्व कर दिया। व्हाट इट कम्स, व्हाट इज नॉट गॉन राइट अराउंड यू। इट इज गुड टू हैव अवेयरनेस, बट टू मच ऑफ कंटेंट विच इज नेगेटिव, consuming slang languages, consuming all these things which has negative impact on you is going to lower your vibrational frequency. जो स्लैंग लैंग्वेज बोली जाती है उसका ट्रेंड कहाँ से आया? यू सी, यू गो टू एनी ऑफिस, इफ एवरीबडी इज यूजिंग स्लैंग लैंग्वेज ओवर देयर, मतलब अगर 4 लोग हैं जो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, आप 6 महीने रख के जाके देखो तो 4 के बदले वो 40 हो चुके होते हैं। बिकॉज उन सबको भी लगता है कि दिस इज, वो थॉट फीलिंग और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इतनी बाहर डाल रहे हैं कि दूसरे भी वही चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दे ऑल्सो बिलीव दिस ऑल इज नॉर्मल एंड वी वॉन्ट टू बी देयर। और कोई डिटरमिन्ड है कि आई डोंट वांट टू थिंक नेगेटिव, आई डोंट वांट टू स्पीक नेगेटिव, वो उस ऑफिस में टिकेगा ही नहीं लंबा पीरियड। ही विल फाइंड आउट अनदर जॉब एंड ही विल लीव दिस। डू यू अग्री टू दिस? So whatever you're thinking, whatever you're feeling about the goal that you want to manifest in your life is exactly the way you will put out the vibrational frequencies, and that only you will connect, that only you will get in your life. So stop watching negative things, stop using slang languages, stop negative self-talk, stop speaking, hearing and seeing negative. गांधी जी के 3 बंदर, Yes. अपने मोबाइल का पोस्टर बना दो, बुरा मत बोलो किसी के भी बारे में, बुरा मत देखो, कोई भी कंटेंट ऐसा मत कंज्यूम करो जो आपको नेगेटिविटी दिखाता है लाइफ की, और बुरा मत सुनो, डोंट लिसन टू द नेगेटिव कंटेंट। आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अपने आप हाई होनी शुरू हो जाएगी, आप अपने आप सब कुछ अच्छा अट्रैक्ट करोगे लाइफ में। अपना सेल्फ टॉक पॉजिटिव कर लो, मिरर एक्सरसाइजेस कर लो, इजी है, हार्ड नहीं है। लगेगा, सी एनीथिंग दैट यू ट्राई फॉर न्यू, इतना समझ लो 15 दिन वो हार्ड लगने वाला है, लेकिन अगर 15 दिन खुद को खींच लिया ना वो करने पे, 16 डेज से आपकी लाइफ में मिराकल्स आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ 15 दिन उस चीज को करते रहना, इट्स वेरी सिंपल। वो 15 दिन ही नहीं होता है ना। वट एवर यू से इट्स योर रियलिटी। मत बोलो नहीं होते, बोलो हो जाएंगे। Yes. Yes, yes. I totally agree. अटैच समथिंग टू इट। सपोज अगर आपने 15 दिन मेडिटेशन करना है तो आप ये चीज को अटैच कर दो नेक्स्ट टास्क से, कि मैं खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मैं मेडिटेशन नहीं करूंगा। तो 15 days I will not get lunch until and unless I don't meditate. 15 days I won't get dinner until and unless I don't meditate. 15 days I will not sleep until and unless I don't create my red diary. Whatever it takes. जब उसका फायदा पता चल जाएगा ना तो आप करना शुरू कर दोगे। Human mind Yes. always works on profit and loss. You tell the profit, you show the profit, you show the results, it will start accepting and doing it. Very simple. Combination of yellow and red
It says Tatastu. So be very careful what you're writing Mm, because it is coming to you. yes. Okay, so Shweta, what I would like to know from you is in our day-to-day routine, how can we structure our routine in a way that we are able to manifest all things that we desire, whether it is about a better lifestyle, lot of money, loved relationship, a great career. So, डिजाइनिंग फ्यूचर, यस, हम उसको कैसे स्ट्रक्चर करेंगे ताकि वो पाथ एकदम इजी हो जाए. ओके, तो पहले जैसे मैंने आपको बताया, आप डिसाइड करो आप कितने साल आपकी लाइफ है, वॉट यू वॉन्ट, द एंड रिजल्ट। उसके बाद आप उसको डिवाइड करो 10 ईयर्स 5 ईयर्स की जर्नी में। लास्ट आएगा 1 ईयर की जर्नी। एज इट्स वी आर स्टार्टिंग विद 2025, वॉट यू वॉन्ट टू लुक योर सेल्फ इन टू 2025, क्या ऐसी चीजें हैं। और कभी भी गोल एक एरिया में बंद बनाओ, गोल 4 एरियाज में बनाओ। आई थिंक 5 एरियाज में, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, योर स्पिरिचुअल जर्नी, देन योर करियर, whatever you want to achieve in all these 5 areas of your life, because एक भी area अगर imbalance है ना, it becomes a wheel. So एक भी area अगर imbalance है ना, तो that will not run smooth. It will always feel the hurdle. You'll always feel the vacuum of not having that thing in your life. Suppose you're too much focused on your career and you're not focused on your health, तो आप इतना करियर के पीछे जाओगे कि आपको करियर में वो मिल जाएगा, लेकिन आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी ना, तो यू विल नॉट एंजॉय द प्रोसेस, यू विल नॉट एंजॉय गेटिंग देयर। मतलब वो मिल भी गया, यू आर नॉट हैप्पी बिकॉज यू कुड नॉट बी हेल्दी इनफ टू एंजॉय दैट गोल दैट हैज कम। सारे एरियाज में पहले तो एक एक गोल क्रिएट करो। इफ यू आर अ बिगनर, क्रिएट वन वन गोल इनटू इट। सेकेंड थिंग, क्रिएट अ विजन बोर्ड विथ पिक्चर्स। ट्राई टू कीप योर पिक्चर्स विद दैट। सेंटर में अपना पिक्चर लगाओ और अपने आसपास अपने वो पिक्चर्स लगाओ जो चीजें आपको मैनिफेस्ट करनी है अपने लाइफ में। सेकेंड स्टेप, विच इज थर्ड, स्टार्ट राइटिंग व्हाई यू वांट देम इन योर लाइफ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट। पहले तो जब आप उसको पेन और पेपर पे बैठ के लिख रहे हो ना, अंडरस्टैंड, इज दिस रियली इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आपकी लाइफ नहीं चलेगी। इज दिस रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू? आस्क योर सेल्फ 3 times दिस क्वेश्चन। इफ इट इज रियली इंपॉर्टेंट, पुट दैट इन योर विजन बोर्ड। दो विजन बोर्ड बनाइए। एक आपका फ्यूचर सेल्फ है कि आपका 10 साल के बाद या 15 साल के बाद आपकी लाइफ यहाँ है, और एक आपका करंट 1 ईयर का विजन बोर्ड बनाइए जिसमें आपने लिख दिया कि मुझे ये चीज़ें मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, एंड दिस इज द थिंग्स दैट आई वांट। ठीक है, आपका विजन बोर्ड रेडी हो गया, आपका वाई रेडी हो गया, आपने सारे एरियाज में गोल्स बना दिए। अब आप रेड डायरी ले आइए अपने लाइफ में, येलो पेजेस के साथ रेड पेन उठाइए, रोज रात को अपना डे स्ट्रक्चर कीजिए कि कल के दिन में आपको 3 इंपॉर्टेंट टास्क कौन से करने हैं। 3 इंपॉर्टेंट टास्क, नॉट मोर देन 3। बिकॉज वेन यू स्टार्ट राइटिंग 5 7 8 9 10, you start feeling overwhelmed and you end doing nothing, and you go into the guilt that this is not working for me. Start with 3. If you feel that 3 is effortless to complete, go for 5. Yes, start writing that, start visualizing, start listening to affirmations every single day. Create your affirmations by your own self. Your affirmation should be as if you're sharing a good news to your best friend or any of the family member that you love. That is the most natural way of creating your affirmations. Create with the time and date, that this is the time and I have done this. First thing, you created your goals. Second, you created your vision board. Third, you created your routine by writing it on the red page, visualizing it every single night. Third, do not copy anyone. Don't understand that this is something that he or she has got, and if I get, I'll be happy. No, your happiness is a different journey. You have a different journey. Find out what is important for you. When you get it, you will be happy. For some people, Mercedes is extremely important because that's a joy list for them. But for the other people, just copying there and getting Mercedes at home is not real happiness. Yes, so find out what is really important for you. Create the list around it. Now find out a person who has already been there. सबसे आसान तरीका है। अब वो वहां पे पहुंच तो गया, उसके बाद ये देखो वो वहां पे मेंटेन्ड है कि नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वहां पे पहुंच गया और आप उसका रोड मैप कॉपी कर रहे हो। आई वॉज वॉचिंग अ इंटरव्यू ऑफ अ सिंगर,
He said that I wanted to manifest great success in my life. I manifested great success in my life. I was a family man. I had a wife. I had a family. But the success went so over the head of me. I left my family. I started going and living single. I did everything that I should not do. I started drinking. I had an affair. I doing everything that I should not do. And I suddenly collapsed in my success. Everything vanished like crazy. So always find out a person who has been there for the long time. See what this person is doing. Go and study about this person. Start following that footsteps. Start doing that in your life. Evaluate your life. Find out, are you the better version of yesterday? हर वीक आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने जो गोल्स बनाए हैं ना उसमें आप 1% बेटर हो. इज 1% डिफिकल्ट? जस्ट 1%. यू हैव टू ग्रो योर सेल्फ विथ 1%. ना इमेजिन हर हफ्ते आप 1% से ग्रो कर रहे हो. आपको लगता है आपके गोल्स आपको लिए अचीव करना हार्ड है? आपको लगता है कि किसी का रोड मैप है, आपको सिर्फ वो रोड मैप फॉलो करना है, उसका लाइफस्टाइल फॉलो करना है कि वो क्या खा रहा है, कैसे जी रहा है अपनी लाइफ? हेल्दी ईटिंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बिकॉज योर सेकेंड ब्रेन इज योर गट. You eat crap, you will feel crappy whole day. You eat good, you will start feeling good because your gut is healthy, your gut is happy. Yes. So when you do Yes. that things, you will start feeling that you're already there. And the most important part of your life should be, should be service. Go outside and serve the world. There are so many people who need help. You can do whatever it feels like. It's not always financial help. Yes, it is important. अगर आप finance attract करना चाहते हो, start helping people financially. Because when you give money with an good intention, that money comes back to your life. But service should be something which is very, very important part of your life. Go and serve. People need so many things in life. किसी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसी को फिजिकल सपोर्ट चाहिए, किसी को मेंटल सपोर्ट चाहिए, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए. आप जिस वे में दे सकते हो आप दो. आप ये चीज याद रखो कि वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने लाइफ में दूसरों के लिए कुछ किया है. जिन्होंने सिर्फ खुद के लिए किया है वो लोग कभी. पैशनेट पीपल आर बीन रिमेम्बर्ड. ओनली काइंड एंड कंपैशनेट पीपल. व्हाई इज मदर टेरेसा रिमेम्बर्ड? व्हाई इज रतन टाटा जी रिमेम्बर्ड? Because they were very kind and very compassionate in their life. So bring that kindness and compassion in yourself. I think life is very sorted and very easy. And it's very simple. Manifestation is very simple. अब से श्वेता, आपने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ना, मैनिफेस्टेशन बिकेम वेरी आप जो मानते हो वो सच है. आप मानते हो इजी है तो इजी है. आप मानोगे अरे यार ये बहुत सिर्फ ना बातें हैं, सिंपल। बातें हैं, कुछ नहीं होगा. बिकॉज अभी तक वो गोल्स। हेलो। यस. आई वुड से श्वेता, आपने जिस तरीके से ये पूरा एक्सप्लेन किया ना, यू मेड मैनिफेस्टेशन सो इजी। एंड डे टू डे अप्लाई भी वो कैसे करना है, जस्ट बाय टैपिंग इनटू योर थॉट प्रोसेस, इट इज बिकमिंग एन इजी लाइफ। ये तो आई वुड से श्वेता, थैंक यू सो सो मच फॉर कमिंग, और ये मैनिफेस्टेशन के प्रिंसिपल्स इतने सिंप्लीफाई करने के लिए और रियलाइज कराने के लिए कि हम मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, हम हम कर ही रहे ट्रस्ट कर ही रहे हैं। बट हमें वो अवेयरनेस में लाके हमें वो इस तरीके से उसको चैनलाइज करना है ताकि हमें मिल पाए जो हमें चाहिए, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दोज रोड ब्लॉक्स टुवर्ड्स व्हाट वी हैं. वांट टू अचीव। आपको थैंक पता यू है सो जब मच। सीड्स होते हैं, यू नो देयर आर हाँ। सम सीड्स, जब ना बोलते हैं ये बीज खराब है, ये नहीं, यस। मतलब ऑलवेज बाय राइट काइंड ऑफ सीड. तो जब आप उसको डालते हैं ना जमीन में तो आपने वो माइंडसेट डाल दिया ये सीड राइट नहीं है. अब आप उसको कितना भी राइट मिट्टी दोगे, सब कुछ उसके अराउंड राइट, उसके सराउंडिंग्स राइट बना दोगे ना, तो भी वो ग्रो नहीं करेगा. आपको पता ही नहीं है वो सीड अच्छा नहीं है.
आपने वो ग्रो किया, आपने एक पॉजिटिव थॉट डाला कि दिस इज थैंक यू फॉर कमिंग इन टू माई लाइफ, थैंक यू, आई ट्रस्ट यू दैट यू विल ग्रो इन टू द मोस्ट ब्यूटिफुल मैनर, थैंक यू, आई लव यू। आपने उसको नर्चर किया, अब वो मोस्ट ब्यूटिफुल्ली ग्रो हो जाएगा, बिकॉज आपने उसमें नेगेटिव थॉट डाला ही नहीं। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है लाइफ। दिस पॉजिटिव या नर्चरिंग से। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है लाइफ में, जिस दिन भगवान के पास जाऊं ना, भगवान को यही बोलना है, भगवान क्या लाइफ दी थी, मजा आया, ठीक है, थैंक यू फॉर द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, एंड दिस इज वेयर आई वांट टू टेक एवरीवन अराउंड। तो श्रद्धा, आई वाज सेइंग, लास्ट डे को भगवान जी को जाके थैंक यू बोलना, वो बहुत ब्यूटीफुल थॉट है डे टू डे लाइफ में इम्बाइब करना। बिकॉज सिर्फ एक दिन आप थैंक यू नहीं बोलोगे, आप डे थैंक यू बोलोगे तो ही आप लास्ट डे को थैंक यू बोल पाओगे उनको। ट्रू, 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 वेल सेड। And I want to take a moment and appreciate you, Namrata, for doing the work that you are doing, things that you're doing. आप बहुत अमेजिंग काम कर रहे हो, आप इतने लोगों को हेल्प कर रहे हो उनकी लाइफ में इवॉल्व होने के लिए। अगर आपके चैनल पे जो ऑडियंस है, जो कंटेंट आप उनके लिए लेके आ रहे हो, द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग एवरी सिंगल वीक टू find out the right people for your platform, to create a podcast with them, to edit those podcasts within just mindset to add some value to people's life, because all this is free. You're doing so much work just to add some value to everybody's life. This is the true way you're serving the world. Hats off to you, man. थैंक यू सर। Lots and lots of थैंक यू। effort to do this. I would literally appreciate you for the great work that you're doing. Thank you so much for being there. Thank you so much for helping so many people in this journey to live their life in a better version. थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू फॉर ऑल योर एक्नॉलेजमेंट। बहुत बहुत अच्छा लगा सुन के।